Hi, this is ISI problem set 1. This is for MSQE PEA. Here we have a list of 5 questions. So this is the first one. एक बार आप सारे questions देख लो. This is the second one. You can keep on taking screenshots or you can just pause the video and try these questions. Here's the third one. This is the fourth one. And this is the fifth question. Okay. So try these questions on your own first. That's very important because ISI के जो questions होते हैं, they're a bit very they're different from what's asked in other entrances. So ये आप खुद ही करके you can improve on problem solving of ISI MSQE. Okay. So once you are done with solving these questions, then look at the solutions. और ये जो प्रॉब्लम्स की पीडीएफ है दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन. ओके, so here's the first question. Question is that we have a function from domain is real numbers, codomain is also a set of real numbers. This is the function x into x minus 1 into x minus 2. Then you are asked regarding the whether the function is 1 1 or 2 or both or neither. Okay, so let's see this. So 1 1 on 2 के केस में it's जिस तरीके का ये फंक्शन है तो बेटर अप्रोच वुड बी ग्राफिकल अप्रोच. वी कैन सिंपली प्लॉट दिस फंक्शन. इट्स क्वाइट इजी टू डू दैट. सो द फर्स्ट थिंग इज यहाँ पर आप रूट्स देख सकते हो इस फंक्शन के. रूट्स या जीरोस कहते हैं, राइट? तो रूट्स आर 0 1 and 2. ओके, इफ यू इक्वेट दिस फंक्शन टू 0 you'll get x equal to 0 or 1 or 2. So 0 1 or 2. And if you multiply all these three factors, then you will get x cube as the highest, the term with the highest degree. Okay, so if you take limit x tends to infinity of fx, then it will go towards that would be infinity. And limit x tends to minus infinity fx would be minus infinity. The reason is ये फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू जो फंक्शन का जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म होता है, विच इज एक्स क्यूब इन दिस केस. तो एक्स एज एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स क्यूब गोज टू इंफिनिटी, दैट्स व्हाई. सो विच मीन्स यहां से पास होने के बाद द फंक्शन विल बी लाइक दिस. ओके, और मे बी लाइक दिस, दैट डजंट मैटर. वी डोंट नीड टू चेक दैट. एंड बिफोर जीरो, ये रूट आने के बाद, यहाँ पर रूट आने के बाद इस एक्स एक्सिस को यहाँ पर कट करने के बाद इट विल go down only. Okay, so which means it will be like this. It has to be like this. Okay, so if that's the case, now we can easily check whether it is 1 1 or 1 2. So we can do a horizontal line test. So which gives us that 1 1 होता है कि for each y you can have you need to have at most 1x, but turns out यहाँ पर it has 1 2 3. So there is no this is more than 1. So that's a problem. So it's not 1 1. Okay, so it's definitely not 1 1 because it has failed horizontal line test. हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है यहाँ पर. वेल यू कैन से कि यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, सो दैट्स राइट, बट इट शुड होल्ड फॉर ऑल वाई. ओके, फॉर ऑल द वाई. तो सिर्फ एक या दो जगह नहीं, इट हैज टू सेटिस्फाई एट ऑल द प्लेसेस. ओके, देन ऑन टू, फॉर ऑन टू what you need is that for each y you need at least 1x, so which is obviously here. This can go down further, this can go up further. तो यहाँ पर obviously for each y जब भी आप चेक करोगे there will be at least 1x. यहाँ पर this we have 3.
here we have 1. So uh, for each y, there is at least 1x, so this implies onto. So this is onto but not 1, 1. So f is not 1, 1 but onto. So that's option D. Okay, I hope you got it correct. It's simple tha. Let's move to the second question. Here it is. Which of the following statements is true for all real numbers? X. Okay. So again, I would like to approach this problem graphically because ये जो options हैं यहाँ पर I know how to draw e to the power x, e to the power minus x. I know how to draw 1 minus x. So it's much better to simply plot both the functions. So this is how minus x, where y equal to minus x. And then you need to add 1. So which brings the function one step up. So it will look like this. Okay, so it will pass through 1. So this is uh, y equal to 1 minus x. Okay. Then what about e to the power x? So let's check that. So e to the power x, well, e to the power 0 is 1, so it will pass through this point only. So it will look like this. Okay, this is how e to the power x looks like. So clearly, जो क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट ऑल रियल नंबर्स एक्स, तो यहाँ पर एक तरफ it is lower and after 0 it is higher. E to the power x is more than 1 minus x when x is more than 0, and it is less than uh, 1 minus x when x is less than 0. So ये दोनों ही ऑप्शन कंप्लीटली होल्ड नहीं करेंगे, so we can reject these. So if at all answer exists, then it has to be from these two options. So e to the power x नहीं होगा. Well, I know how e to the power minus x looks like. It looks like this. This is e to the power minus x. Okay. Well, you might ask कि how do you know कि ये ऊपर से ही निकलेगा? Well, तो पहले इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देख लेते हैं. तो e to the power minus x is higher. So B option is correct. That's for sure. Okay. पहले ऑप्शंस के हिसाब से मैं आपको एक बार बात बताता हूँ. तो if what I do is if I try to do this, ठीक है, सो आउट ऑफ ए एंड बी फिर से कोई भी होल्ड नहीं करने वाला. ठीक है. तो ऑब्वियसली यही होगा, तभी कोई आंसर आ रहा होगा. गेटिंग द पॉइंट. और कोई ऑप्शन ही नहीं है. अगर आप इसे नीचे से निकाल दो, देन ऑब्वियसली यहाँ पर ये हायर है और यहाँ पर ये लोअर है. ओके. तो दोनों ही ऑप्शन फिर से होल्ड नहीं करेंगे. तो ये हो ही नहीं सकता. e टू द पावर x के केस में तो आपको पता ही था. इट लुक्स लाइक दिस और इट इज लाइक दिस. तो यहाँ तो आपको फुल क्लैरिटी है कि ये तो होगा नहीं. तो ए और बी में से ये अगर होना है तो ऑब्वियसली ऐसा रहा होगा, तभी आंसर आ सकता है. ओके. बट ऐसा क्यों रहा होगा वो डिस्कस कर लेते हैं. सो e to the power minus x is the, let's say this is the function which we are considering right now. So the derivative would be minus e to the power minus x, which is less than 0. So that makes it decreasing function. That's fine. And if I take the second derivative of it, it will give me e to the power minus x, which is positive, which means the function is convex. Okay, so it decreases at a decreasing, this is decreasing at a increasing rate. Okay, तो next, तब जैसे एक x increase होगा, सो जो गैप आएगा वो जो कम होने का गैप है, दैट्स मच मोर. ओके. एंड जब आप कंसिडर कर रहे हो फंक्शन y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इन दैट केस इट इज डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ओके. सो y डैश इज माइनस 1 एंड y डबल डैश इज 0. ओके. तो ये हर बार एक एक यूनिट नीचे जा रहा है.
सो यहाँ पर दोनों इक्वल हैं, दैट्स फॉर श्योर। ई टू द पावर जीरो इज वन, और वन माइनस एक्स भी यहाँ पर वन है, बिकॉज एक्स जीरो होने पर दिस विल गिव यू वन। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल होंगे। तो सिंस इट इज डिक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट, तो पिछले यूनिट पर ऑब्वियसली दिस हैज टू बी मोर, बिकॉज ये ज्यादा डिक्रीज होकर आया है, और वन माइनस एक्स सिर्फ एक यूनिट कम करके नीचे आया है। ओके, सो दैट मेक्स इट go that makes it a bit higher previously. So what you can also check is कि maybe you can check it, let's say x equal to minus वन। ओके, एक तरफ है आपके पास y इक्वल टू e to the power माइनस एक्स, और दूसरी तरफ है आपके पास वन माइनस एक्स। So this will give you 1 plus 1, which is 2, and this will give you e to the power minus minus 1, which is e, which is roughly 2.7. So it has to be high. Okay. Anyways, so correct answer is B. All right. Let's move to third question. Let f be a function from set of real number to set of real number. So, and it is a differentiable function. Okay. And what we are given is ki fx into f dash x is less than 0 for all x. Then which of the following is necessarily true? That f is an increasing function, f is decreasing function, mod of f is an increasing function, mod f is a decreasing function. तो पहले मैं मिस्टेक डिस्कस कर लेता हूँ जो काफी स्टूडेंट्स कर देते हैं, दैट व्हाट यू आर गिवन इज एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। सो एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, आप एफ एक्स को दूसरी तरफ ले जाते हो, एंड यू से दैट नाउ एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, सो विच मीन्स एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन, which is wrong because you don't know कि fx positive है या negative. So what you need to remember is, or you might know this, that जब आप इनइक्वालिटी के केस में यू कैन नॉट सिंपली टेक अ फंक्शन टू द अदर साइड, बिकॉज अगर वो पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी रिमेन द सेम, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इनइक्वालिटी चेंजेस। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू हैव माइनस एक्स लेस देन जीरो, देन एक्स इज मोर देन जीरो। आप माइनस वन अगर ट्रांसफर करोगे उस तरफ तो एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग बिकॉज यू डोंट नो आप जो आप एफ एक्स लेकर जा रहे हो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, which because that's not given in this question. Okay, so what we can do is, let's see this. I'll give you three methods to understand this. Method one, what you are given is fx f dash x is less than zero. Okay, तो मैं पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई यहां पर कर सकता हूं, दैट्स अ बिग, एंड इनइक्वालिटी विल स्टिल रिमेन। बट इफ आई मल्टीप्लाई विद अ पॉजिटिव नंबर बोथ साइड्स, आई कैन डू दैट। बट और मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूं करने का? वेल द थिंग इज, this seems like chain rule. पहले you have fx, then uh, then you are having f dash x. Okay, so seems something like a chain rule thing. So if I multiply by 2 both sides, there will be no impact on the inequality. Now notice that this is nothing but the derivative of fx square. Okay, this is derivative of fx square, which is less than 0. Okay, and if that is the case, then this means mod of fx is decreasing. ये एक theorem भी है, that if square of a function is decreasing, then mod of that function is decreasing. And the idea is, um, under root of x
square is actually mod x. Okay, it's not x, it's not plus minus x, it's mod x. जो अंडर रूट ऑफ अ फंक्शन होता है दैट लुक्स लाइक दिस. ओके, सो बाय कन्वेंशन इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर ओनली. अगर आप अंडर रूट 4 कर रहे हो दैट्स नॉट प्लस माइनस 2, it's actually only 2. ठीक है, सो दैट्स द आइडिया एंड इट इज वेरी इजी टू प्रूव एज वेल. अगर आप इस चीज को प्रूव करना चाहो दैट कैन बी डन इजीली. You can assume some numbers like a less than b, तो f of a less than f of b करके f of a more than f of b करके you can start doing that. Anyways, let me give you the property. If square of a function is decreasing, then mod of f is also decreasing. ठीक है, if you want the proof of this, then do let me know. I'll provide you that. Okay, so that's method one. Let me give you method two. So we have fx, f dash x less than 0. So if this is true, let me add a page here. I need to add a page. 1 second. Yeah, so agar this is given to be true, then f dash x upon fx less than 0. This is also true. ओके, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, राइट? बिकॉज अगर यहाँ पर एफ एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही है. अगर एफ एक्स यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ भी नेगेटिव ही रहेगा. ओके, बट द ओनली कंडीशन आई नीड टू टेक इज एफ एक्स. आई कैन डू दिस ओनली व्हेन एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. आई नीड दैट, राइट? बिकॉज आई कैन नॉट डिवाइड बाय 0. ओके, तो यहाँ हमने कुछ डिराइव नहीं किया, या फिर what you can do is, let's say I'm doing this. I'm dividing by fx square both sides. Okay, then it works. All right. So now we are here. So this is true. So now notice that again using chain rule, this is nothing but derivative of log of fx. Okay. एंड सिंस आई डोंट नो कि एफ एक्स पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपने देखा होगा लॉग में यहाँ लगेगा मोड. ओके, बिकॉज लॉग का जो डोमेन होता है इट कैन नॉट बी नेगेटिव नंबर्स, इट हैज टू बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. ओके, सो दिस इज लेस देन 0. ओके, तो अगर दैट्स द केस एंड दैट मीन्स log एफ एक्स इज डिक्रीजिंग. This is decreasing. And if it is decreasing, then that means mod of fx is also decreasing. And that's because log x is increasingly monotonic function. तो ये monotonic functions के लिए ये चीज होल्ड करती है. ओके, अगर log of some function is decreasing, then that function also has to be decreasing. Okay, so दो मेथड हो गए. Let me show you one more method. And I guess that's not a method, but that's just, I'll just prove कि why mod fx should be decreasing. अगर आप mod fx की बात करो, so it will be fx. mod x क्या होता है? mod x is x अगर x पॉजिटिव होगा, and it is minus x अगर x नेगेटिव होगा. So similarly, mod fx will be fx if fx is positive, and if it is minus of fx if fx is negative. Okay, or 0 per 0. Okay, you can include it anywhere. Now अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, ये वाला केस लेते हैं,
if fx is positive. Let's consider this case. Then in that case जो आपको given है fx f dash x less than 0. तो अगर ये पॉजिटिव है, I can take it to the other side, then that will give me f dash x less than 0. So which means fx is decreasing. यानी this thing is decreasing. अगर ये decreasing है यहाँ पर तो this is decreasing. Okay, क्योंकि वो दोनों equal है. And then if I consider the second case, if minus fx is if fx is negative, second case, then in that case fx f dash x ये आपको given है. Now this time if I take this to the other side, क्योंकि ये negative है तो inequality change हो जाएगी. So that gives me f dash x more than 0. Inequality change हो जाएगी because this is negative. आप negative factor को other side लेकर जा रहे हैं. Okay. And if f dash x is positive, if I multiply by minus, then inequality will change. So minus f dash x is less than 0, so which means minus of fx is decreasing. तो fx नेगेटिव के केस में दिस थिंग इज डिक्रीजिंग, और अगर ये डिक्रीजिंग है तो ये डिक्रीजिंग हो. तो बेसिकली यहां पर भी ये डिक्रीजिंग है, इस केस के लिए भी ये डिक्रीजिंग है. तो ओवरऑल ये मोड ऑफ fx इज डिक्रीजिंग. तो दिस इंप्लाइज मोड ऑफ fx इज decreasing. Hopefully you are clear with this. And as I told you, if you want the proof of this, you can tell me, I'll provide you that. So mode of f is decreasing. Okay, so we are done with 3 questions. Let's move to the fourth one. So we have this function where domain is from 0 to infinity. Well, the reason is कि function में log involved है, तो उसका जो domain है वो यही है. So you cannot have domain as real numbers. So that's the reason. And you have to find the number of roots of this function. Okay. So number of roots निकालना है basically कि fx equal to 0 कहाँ पर होगा. बेसिकली ये जो फंक्शन है वो x एक्सिस को कहाँ कहाँ पर टच या इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, सो log x minus x plus 2 equal to 0 ये आपको सॉल्व करना है, विच इज सेम एज log x equal to x minus 2. ओके, तो अगर हम ये निकाल लें कि ये दोनों इक्वल कहाँ पर होते हैं, बेसिकली ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहीं पर फंक्शन का रूट भी होगा. ओके, तो फॉर डूइंग दैट आई कैन सिंपली प्लॉट बोथ द कर्व्स. दिस इज log x, right? And this is y equal to x. Now I need to subtract 2, so the 2 units नीचे आ जाएगा. It will look like this. This is minus 2. This is 2. Okay, so this is y equal to x minus 2. And log x, we know that log 1 per 0 होता है, तो it has to pass through here, through this point. And it is concave, and this is a straight line. ठीक है, so obviously it will cut it somewhere. कभी ना कभी इसे कट करेगा because it is increasing and concave. Okay, so it has to cut this. मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि ये बस ऊपर ही जाता रहे. Concave है तो it has to intersect that. Okay, so which gives us 2 points of intersections. तो जैसे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, so their difference will be equal to 0. So which means we have 2 roots. ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 रूट्स आ जाएंगे. ओके, मूविंग ऑन. द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x³ plus 3x² plus 3x plus 7 equal to 0.
तो इसके रियल सॉल्यूशंस निकालने, बेसिकली फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स दिस होल फंक्शन इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो a cubic function, what I can do is, let me try this. I have fx equal to x cube plus 3x square plus 3x plus 7. If I take the derivative of this, then that gives me 3x square plus 6x plus 3. Okay. And so I can take 3 common. So x square plus 2x plus 1. Well, this is nothing but x plus 1 whole squared. Okay. So 3 हमेशा पॉजिटिव होगा. This is always positive. So this thing is more than equal to 0. तो ये जो फंक्शन है, that's increasing function. fx is increasing. So if it is an increasing function, it can, अगर कोई function increasing है, तो obviously it can cut the x-axis at most once. या तो ये ऊपर से ही निकल जाएगा, या फिर ये एक्स एक्सिस को एक बार कट कर सकता है. ओके, सो अब या तो एक रियल सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशंस होंगे, और कोई ऑप्शन नहीं. सो व्हाट वी नीड टू चेक इज कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. एंड हाउ कैन वी डू दैट? वेल, व्हाट आई नो इज, इफ आई टेक लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, हमने अभी डिस्कस किया था, एक्स क्यूब डिसाइड करेगा फंक्शन कहाँ जा रहा है. इट हैज द हाईएस्ट डिग्री. सो अगर एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो फंक्शन भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. एंड इफ it goes towards infinity x, then in that case fx will also go towards infinity. So which means if this is the x-axis, then it is going towards minus infinity when x tends to minus infinity, and it is going towards infinity when x is going towards infinity. So which means it has to intersect the x-axis. So it has exactly one solution. Okay, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, और ये कहीं जा ही नहीं सकता. एक ही बार कट करेगा, इट विल नॉट come back because it is increasing function. So it has to be like this. Okay. So answer is B. So that's problem set 1. I hope you are able to do it on your own, and if not, आपको clear हो गया होगा. Okay. So do let me know how you felt about these questions. Okay.